How are you all? I am Nisha, teacher from Ashwini Vidyalaya. We have completed till chapter number this 32 and I have given you this homework so you can do your work. And today we are going to start with the chapter number 33. My India. Yes, my India. Yes, my India is a very different place from the other countries, right? Prayer places. Now we have seen this in our EVS book also. हमने ये चीज़ें हमारे EVS के बुक में भी देखी है. Look at the different religions go to the different places to pray. Today let us see a few such places. Yes, हमने ये सब चीज़ें हमारी किस में देखी है, हमारे EVS का जो अभी चैप्टर चल रहा है उसमें भी हमने देखा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हमारे धर्म रहते हैं उसमें अलग अलग प्लेस होती है उनकी प्रेयर करने की. राइट. सो लुक एट द पिक्चर देन कंप्लीट द ब्लैंक टू know the correct place of the prayer. Now Hindu goes to the temple, Christians go to the church. Hindu temple, Christian church, 3 mosque, 4 gurudwara. 3 Muslim goes to the mosque, सिख गोज टू द गुरुद्वारा. राइट. अब मंदिर में क्या होता है, बहुत सारे मंदिर के हमारे तो मंदिर भी अलग अलग है. शंकर भगवान का, हनुमान दादा का, गणपति बप्पा का, बहुत सारे भगवान उतने ये मंदिर. लेकिन क्या कि हम टेंपल में जाते हैं, हिंदू है ना हम, तो क्रिश्चियन चर्च, मुस्लिम मॉस्क, सिख गुरुद्वारा, पारसी अग्यारी में जाते हैं वो लोग. राइट. देयर आर डिफरेंट सिंबल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस. सी हिंदू, मुस्लिम, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, ये हमारे 4 डिफरेंट कास्ट है और उसके सिंबल है. मैंने आपको ये हमारे नोटबुक में भी ड्रॉ करवाया था EVS बुक में. वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजियस एज ऑल ह्यूमंस आर सेम इन द आइज ऑफ गॉड. भले बोले ना धर्म अलग है बट हमारा जो इंसानियत है वो तो सेम ही है सब में, है ना. इंसान, हर एक इंसान सेम है. ह्यूमैनिटी इज द सेम फॉर द एवरी वन. नाउ वी विल go to the next chapter 34. Natural kingdom. Yes, natural, what the things which we are getting from the nature. We are getting many different things from the nature like fruits, vegetables, plants, animals and other many things. So now today we are going to see a vegetable basket. Yes, आप vegetable वाले आंटी के पास जाते हो. Yes, vegetables are different part of the plant used by us as a food item. Let us learn about a few vegetables today. Now you write the correct letter in each box to know the vegetable. आपको ये फोटोज देखने हैं और उधर पे नाम लिखना है ना. So see, D1 is the carrot, radish, cucumber, cauliflower, okra. Ladyfinger is also known as okra. Ladyfinger, spinach, cabbage, brinjal. Right. And this is capsicum and many more vegetables are also there. And vegetables are having the more energy and the more things, vitamins and proteins in it. Vegetables are a great source of vitamins and proteins. We should have lots of them in form of soups and salad. हमें कुछ चीज़ें जैसे कि ये कैरेट, टोमेटोज ये वगैरह है वो हमें कच्चे भी खाने चाहिए सो दैट कि हमें उनके सलाद में जो प्रोटीन हो वो हमें पूरे मिल सके. राइट. In vegetable like cucumber and carrot, most of the nutrient is stored in their skin. Do not peel them but eat them with their skin. अभी हम स्किन के साथ कौन कौन सी वेजिटेबल्स खा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, फिर कैरेट, रेडिश, कुकुम्बर उनकी स्किन में भी है. टमाटोज, जो कि हम टमाटोज को तो नहीं छीलते हैं फिर भी. राइट. नाउ वी विल सी विद द नेक्स्ट वन, चैप्टर नंबर 35. मैनरिज्म. लैंग्वेज एंड लिटरेचर में आता है मैनर्स. नाउ वी हैव सीन मैनी मैनर एंड वेरी अदर थिंग्स फॉर आवर रेगुलर लाइफ इन आवर moral book. So today we will see other things. Good manners are the part of
every culture and a country. Let us learn a few basic manners today. Yes, manners are a very important part in our life. We should always respect other so we can get a respect. अगर आप किसी को respect दोगे नहीं तो आपको return में respect मिलेगी नहीं. ओके नाउ सी आपको कैसा बिहेव करना चाहिए वो हम आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं. बी गुड, वेकअप अर्ली, ये भी हमने हमारे ईवीएस के बुक में ऑलरेडी पढ़ा है. वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, do prayers, do your breakfast, take a bath, and then go to the school, do your homework, come back, respect your elders, and whatever we have seen many things. Now, what will Richa say in each situation? Read and the sentence, then look at the picture and write the correct word in the blanks. Just before going to bed, good night, and after waking up, good morning. When she receives a gift, whenever anyone gives us gift, we should say always thank you. When she sneezes in the public, excuse me या फिर sorry हम कह सकते हैं. When she drop a vase by mistake and it break, जब हमसे कोई चीज़ टूट जाती है या फिर कुछ बिगड़ जाता है तो हमें उन्हें सॉरी बोलना चाहिए. When she wants to enter in the class, may I come in sir, may I come in ma'am. Right, these are the basic and our 3 golden words: please, sorry, and thank you. And when we want something we should always say please. A good mannered person is always loved by all. We must try to make use of golden words as much as possible. Please, thank you, sorry, excuse me, may I, sorry, etc. are the golden words. Okay, now next. Now this is a mixed bag, and in this mixed bag it is the what mixed bag में पूरी दुनिया के बारे में हमें दिया गया है. Let's see. Complete the blank to know the answer. Use the help box. The Amazon is a Esmico. It is a brand, right? It is a brand. Now Amazon is a river, and I was talking about that Amazon. Which one? Which we are buying from the internet, right? This is Amazon is a river. This too. Dash was a famous dancer. Who was the famous dancer? Yes, Michael Jackson. He was a singer also and a dancer also. Dash is the capital of India. Yes, Delhi is the capital of India. The dash is surrounded by air, or the earth is surrounded by the air. Eskimos live in the igloos. These people live in the igloos. Sri Lanka lies to the south of the Indian. यह हमारे साउथ इंडिया के बाद में आता है हमारा श्रीलंका. Dash are famous mountain of India. Himalayas are the famous mountain of the India. See, यहाँ पे हम दिल्ली का river 1, दिल्ली 2, नहीं, माइकल जैक्सन 2, दिल्ली 3, अर्थ 4, इस्मिको 5, श्रीलंका 6, Himalayas 7. How much do you know about the world? Jot is down in your notebook and share it with your class. You will be surprised to know. Yes, you can also search on the internet and get the information, many other things. People some live in the houses that float on the water. Such houses are called houseboated. And ये हमें कहाँ मिलते हैं? हमें ये बोट्स जो है वो साउथ में भी मिलते हैं और ऊपर हमारे लद्दाख साइड भी हमें ये सब मिलते हैं. Okay then kids, we will continue in our next lecture. Till that time, take care, stay home and stay safe. Bye bye.